ये पॉडकास्ट वॉडकास्ट क्या है? ये पॉडकास्ट वॉडकास्ट क्या है? क्या है? जानिए दीप्ति के साथ। Today I have with me Souniya Khurana, CEO and co-founder of WYN Studio. WYN Studio शुरू हुआ था अगस्त 2019 में, बिल्कुल उसी समय के अराउंड जब HT Smartcast भी शुरू हुआ था. वेलकम टू ये पॉडकास्ट क्या है सोनिया? हाउ आर यू फीलिंग? Super excited, Deepti, and thank you for having me here. Yes, interesting तो यही है कि we started our journey almost at the same time. So, है ना? And from that time to now, we have come quite a way ahead. मतलब काफी रास्ता like journey तय कर ली है and long way ahead. ऐसा So, फटाफट से Air 5 on that. अच्छा, बट ये बताओ कि वाइन started in the latter half of 2019 and then pandemic just इसने हमारी नया लगा दी मतलब पार लगा दी. Now अब it is a known fact कि pandemic बहुत ही अच्छा रहा पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के लिए world over. So tell us about your highs and more importantly lows of what your experience has been. हाँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है. Takes me back in Thank you, time thank when we you. started, right? तो यार मतलब मैं जब भी किसी को वाइन के बारे में बताती हूँ ना तो मोस्टली this is where the conversation starts and this is where I introduce wine की और बड़ी with a lot of pride and happiness कि उस टाइम से लेके अभी तक जो highs and lows देखे हैं उसके बावजूद we have come where we are. Yeah. And like you said कि pandemic proved to be a good time for podcasting. पता नहीं था ना, how did we know कि it will prove to be a good time? True. So, ऐसे गिन चुन के ऐसे नंबर आ रहे थे लिसन्स के and suddenly it just spiked her. It was crazy. absolutely. And for us, for example, right from starting in 2019, latter half of 2019, hiring one person in the team, और उसके बाद January or February of 2020 went into actively pitching to brands, speaking to brands and platforms. Like यार ये साल ना काफी धांसू होने वाला है because everybody is wanting to explore what podcasting is and how does it work for them. And then March 1st, I remember we took up our office space in one of the co-working spaces. Mast हमने, we took a 4-seater fancy cabin and we were like, chalo, this year is going to be kick-ass. Not that it was not, but we expected it to be different. And 1st March से 18th March, hardly 10 days we used our office space. 18th March, Janta curfew happens and then the simultaneous lockdowns. Brands stopped speaking to us and we were like, oh shit, अब तो गए. अब तो मतलब बजने वाला है बैंड. अब समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या है. We felt like पूरा like blinders on, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि we blindfolded, वो feeling आ रही थी. हाँ. So then interestingly, me and my co-founder Bijay, we decided कि यार ऐसा करते हैं, 3 लोग ही हैं अपन, ज्यादा stakes high नहीं है. Let's just at least ensure कि frugally let's produce some interesting shows so that by the time the market opens, at least we have something to showcase as a part of a portfolio. यार मेरा ना ऐसा मन कर रहा है जैसे तुम्हारी ऐसे नजर उतार लूं अभी because this is exactly what we did कि करो तो सही, करके तो देखते हैं, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है. Correct. And वही किया हमारे लिए. Thankfully, Deepti, one thing that worked in our favor was that our first podcast was with Pallavi Rao Narvekar, who was herself, an acclaimed and famous RJ with one of the radio stations at one point in time. Yeah. उसके बाद, she went on to do other things, but she was somebody who's been an example of how you live despite a chronic illness like cancer and myasthenia gravis. And we decided to do this show called Can Inspire with her. So for somebody who as an RJ lost her voice, got back her voice, and then started podcasting because of her sheer love for the mic, was a story that we couldn't stop ourselves from sharing. Bro, goosebumps. And goosebumps are I know, right? And that is what the show did for everybody who heard it. So it changed lives, and that's when we realized कि यार कुछ तो सही कर रहे हैं with the feedback that's coming our way. कुछ तो सही कर रहे हैं. Agreed. And Agreed.
Then the other 3 shows happened in the same year, 2020, which again went on to really get recognized. One of our shows was Heirs of the Pandavas, which was this very, जो मैं ना दिल से कहती हूँ, वो बड़ा संजय लीला बंसाली production in audio है. That's the kind of sound वाह design. यार, I mean, I am so surprised कि देखो आपके जितने भी podcasts हैं, now you are an out and out production company, right? And when it comes to podcasts, most people are generally aware कि मतलब audio companies जिनके अपने अपने distribution platforms हैं, तो अगर किन्हीं लोगों ने ये सुने भी होंगे नाम of these podcasts, तो they might connect it to say a distribution platform rather than you. तो अब how do how does WYN position itself amongst all of these things? और आप ये distribution वाली जो problem है ना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे individual podcasters ये podcast सुन रहे हैं, ये radio show सुन रहे हैं, I'm sure कि उनको भी ये question होगा कि how did you solve for the distribution problem? So, it is always in an industry, मतलब there will be various, जैसे एक supply chain mechanism होता है, right? In any industry. So हमारी industry का ये supply chain mechanism है. There's a production side of things, then there's a distribution side of things, there's marketing side of things. Now you can be either you can either be an Ekta Kapoor or a Balaji of an industry कि आप सब चीजें own करो, हाँ, and आप औरों के लिए भी production करो, या you can ensure that you create your niche in one thing and create your strength and depth in that thing. So for us, production seems to be that thing. अब distribution के already इतने सारे platforms है, to become another platform for distribution, and distribution has its own advantages, no doubt, Deepti, कि you own the consumer end to end. You know what the consumer is doing, where they are listening, what are they listening, when are they dropping off. You get to know so much insights into the consumer, and you can create content that caters to them. But as a production house, kahin na kahin, we feel that there's a slight challenge when it comes to owning the consumer data. पर ठीक है, वो भी evolve हो रहे हैं. Every platform is evolving, and it works in the platform's favor to give us consumer data so that we create content for them which caters to their consumer. Yeah. And that's how dashboards, as you will see, are also increasingly becoming better by the day. Yeah, cleaner. Right? So जो dashboards पहले हुआ करते थे, जो analytics पहले मिलते थे from the media hosts or from the platforms, वो अब काफी evolve हो गया है. That's because at the end of the day, platforms also understand keeping the data to themselves entirely wouldn't help if it doesn't cater to the consumer. Yeah. बहुत ही ना like podcasting as a medium, मुझे ऐसा लगता है कि maybe it's because it's new, but और आगे चल के पता नहीं क्या होगा, but अभी ऐसा लग रहा है कि everything is out in the open, बहुत ही खुल के and मस्ती से कि ये भी करते हैं ना, वो भी करते हैं ना, ऐसे करके होता है. So tell me, what made you fall in love with podcasting, with this medium, इतना कि you opened a company? यार, so मेरी कहानी ये है कि मुझे ना कहानियों से प्यार है. And thankfully कहानियों का व्यापार है. That's how I put it. So for me, podcasting as a medium came into my life only in 2019. I got exposed to in 2018. उससे पहले पता भी नहीं था, to be very honest. उससे पहले रेडियो ही सुनती थी, रेडियो पता भी था अच्छे से. I remember listening to all the radio, all the RJs that I still love connecting with. But podcast में शायद से अभी that kind of an affinity with the host is still to develop, क्योंकि बहुत सारे होते जा रहे हैं, कोई structured वो नहीं है. जैसे when you know that you're listening to a Fever FM, right? You know that these are the RJs that you would listen to. True. You know that these are the hosts that you will listen to. तो वो भी evolve हो रहा है. People are creating that affinity with the hosts of the shows. Yeah. But for me, again, the love started 2019 May, when I learned podcasting from my co-founder, who was then a podcast coach. Yeah. He did this retreat in the Himalayas. I went to learn it, and I created my first episode back then. And that's when I realized, यार, बहुत ही beautiful medium है, काफी on demand है. It can, the fact that the power goes into the hand of the audience, कि they can listen to it at the time they want to, they can consume it at the pace they want to, and the kind of content that they want to opt in for.
So that's where I started realizing it has potential, and So that you fell in really- love with the freedom of the medium, and therefore the Absolutely. Tibetan prayer flags ऐसे जो तुम्हारे पीछे है स्टूडियो के लोगों के साथ, very nicely put यार, क्या visual है. Thanks, yeah. So अच्छा, ये भी पहाड़ों हाँ, से ही आया, thanks to that है ना, podcast retreat. है ना, वेरी कूल. पता है कभी कभार इतनी अजीब अजीब चीजें हो जाती है जो हम फन के लिए करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे जिंदगी बन जाती है. तो कहानियों से प्यार और कहानियों का व्यापार. व्यापार. तो अब you and your team at WYN take pride in creating branded podcasts. आपकी मतलब टैगलाइन ही यही है कि हम ब्रांडेड पॉडकास्ट्स बनाते हैं. So now and हालांकि people don't know about this, लेकिन जो भी इसमें काम कर रहे हैं, इस मीडियम में अभी काम कर रहे हैं, ब्रांडेड पॉडकास्ट एक शॉर्ट वे है मोनेटाइजेशन का. लाइक दैट इज द फैक्ट ऑफ द वीक. So Sonia, I want to ask from you कि what is the first thing that a brand asks you जब आप उन्हें पिच करते हैं कोई भी पॉडकास्ट. ऑल्सो ये पहली चीज जो पॉडकास्टर आपसे पूछता है when you offer them to create a podcast for a brand. ये दो चीजें बताओ मेरे को. यार पहले तो ब्रांड पूछते हैं ऑडियो क्यों, मतलब इतना कंटेंट हम वीडियो में कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, बट व्हाई ऑडियो? आई डोंट मेक, इफ आई हैव एक्स अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव एज अ बजट, देन why should I spend it in audio? And that's where we tell them ki boss, the kind of deep engagement that audio offers no other medium offers in a time when we are living in a like सबकी goldfish से भी कम attention span है. मात्र 8 सेकंड का attention span है एक human being का, तो उसमें आप क्या expect कर रहे हो? And उसमें अगर there is a medium that is offering an engagement which is up to at least a 10 to 12 minutes. And if I was to state some facts कि यार इस time पे in the country as per a global web index report, average consumption of a podcast in the Indian context is about 66 minutes. 1 hour 6 minutes. वाह यार. I mean मेरे को ना ऐसे हाँ, like I feel so proud when ऐसे statistics निकल के आते हैं. मेरे मीडियम, मेरा मीडियम, तुम्हारा मीडियम, सबका मीडियम. Correct, right? Yeah. And which other medium offers that, Deepti? और तो Yeah. मतलब मैं नहीं जानती कि when did I literally watch a branded piece of content in video for more than few seconds? I don't remember. आजकल तो 30 सेकंड भी बहुत लंबे लगते हैं. If you know what I mean. Absolutely. उसमें भी हम scroll economy में है, जहाँ पे the phones are continuously scrolling and there are other apps, other piece of content that is vying for my attention. Then if a piece of content can seamlessly play and blend into my background and I can still consume it if I like it, then why shouldn't a brand invest into it? That is true. That is very true. In fact, आजकल तो मतलब YouTube पे भी अगर हम कोई सीरीज देख रहे होते हैं या कोई वीडियो चल रही होती है तो बैकग्राउंड में ही चलती है more often than not. अच्छा, but what is the first thing that a podcast asks you? ये तो बहुत ही मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग सा सवाल आने वाला है, मतलब जवाब आने वाला है मेरे पास. मुझे लग रहा है कि पॉडकास्टर क्या पूछता है. ऐसा मिलेगा क्या? सही जवाब आपको मिलता है अंडा. तो फिर हम उनको बताते हैं हाँ ये ऐसा, मतलब then whether it is a revenue share deal or whether we do a flat fee, then we explain to them the whole way we'll go about it, who will own the IP, what will be the process, and yeah, but the first thing everybody wants to know, especially in podcasting, is the way they can monetize, because as a creator I think everybody is right now struggling with the monetization aspect of podcasting, which again is something that टीरिंग ट्रबल है यार. थोड़ा सा लंबा चल गया टीरिंग ट्रबल, वो अलग बात है, पर ये भी मसला हल हो जाएगा. मैं एक बात बताती हूँ. तो अभी ना अपन ने वी हैड दिस एपिसोड विद IAB, विद शैलेंद्र धार फ्रॉम IAB, राइट? एंड ही आई थिंक एंडेड अप सेइंग कि 2019 तो तब तक तो पॉडकास्टिंग अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन 2020 में ही वंस द पैंडेमिक हिट US, दैट इज व्हेन दे स्टार्टेड मोनेटाइजिंग फॉर पॉडकास्ट्स.
सो या टीदिंग प्रॉब्लम है, मतलब यूएस में तो कब से चल रहा है ना ये, लाइक इट वाज व्हाट 2004 2005 से चल रहा है, एंड अब जाके मोनेटाइजेशन ऐसे स्टैंडर्डाइज हुआ है, तो Right. अपनी भी आएगी, अपना नंबर भी आएगा. एब्सोल्युटली. हमारा यूएस के साथ थोड़ा सा लीड लैग रहता है, वो लीड करते हैं, हम लैग करते हैं, फिर हम उनको फॉलो करते हैं. कोई बात नहीं, ये ट्रेंड है यार, ये तो चलता रहता है, है ना. उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये तो है. So let's continue to learn from. In fact, it's good to always learn from others' mistakes. True. So since they are leading, it is always best to observe their mistakes and learn from it and adapt to it better and in time, so that when we are coming in that journey, so at least we know we are better prepared. True, that's absolutely true. Also, मतलब बाहर की दुनिया और इंडिया में इतना फर्क है ना, लाइक आई मीन हर आई डोंट नो 300 गज में आपकी भाषा बदलती है, डायलेक्ट बदलता है, कहानियां बदलती है, कल्चर बदलता है, तो देयर इज सो मच मोर टू यू नो गिव फ्रॉम आवर एंड. तो जाहिर सी बात है कि इट इज बेस्ट कि हम पहले बाकियों की गलतियां सीख लें, बिकॉज हमारी तो बहुत होने वाली हैं. Absolutely. And so much diversity. And you know, the beauty is that because हमारा dialect, हमारा, you know, everything cultural changes happen like within a span of few miles. That has its own advantages, because right now that has potential for such talent to come up in these, you know, small cities in tier 2 tier 3 जो भारत है. You know, TikTok proved it for us, right? Absolutely. Creators came up. We saw so many creators come up and they had real talent. The talent and content creation became more democratized as a process because of these things happening and because these platforms coming up. So podcasting also offers to the podcaster, thankfully, abhi you know, while it has its own challenges, क्योंकि अभी भी regulatory frameworks के अंदर नहीं आता है to that extent, so that freedom is still there, you know, where you can explore with content, where you can try different formats. It's like अभी मौका है, फायदा उठा लो. Absolutely. फायदा उठा लो जल्दी. जल्दी, उससे पहले कि हाँ ये भी हाँ. गॉट इट. आई थिंक हमारे लिसनर को भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, क्या हिंट कर रहे हैं. वेरी कूल. अच्छा सुनो, एक बात बताओ कि यार मीडियम ना बहुत इंटीमेट है, कहानियां बताने का इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, स्पेशली अपनी पर्सनल कहानियां, तो लिव्ड एक्सपीरियंसेस, पर्सनल कहानियां, इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर करने का भी बहुत स्कोप है. लेकिन व्हाट मेड यू चूज ब्रांड स्टोरीज ओवर इंडिविजुअल स्टोरीज? या तुम मेरे को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा इसमें केस लेने वाली हो, बट लो बताओ मुझे. यार नहीं, इसमें केस क्या लेना है, हमने तो मतलब अब देखो, मैंने क्या बोला कि कहानियों से प्यार है और कहानियों का व्यापार है. हाँ. अब व्यापार है का मतलब ये है कि पैसा तो कमाना है. अब पैसा कौन देगा? कोई तो देगा. ये हुई ना सीधी बात. आई लव इट. कौन देगा बता दो मुझे. हाँ तुम सही कह रही हो बहन. व्यापार में है, व्यापार की बात करते हैं, व्यापारियों से बात करते हैं. So basically, you know, of course, you know, podcasting has power. It is a very intimate medium, like you said. Interestingly, one of the stats is कि 92% of listeners listen to a podcast alone. Yes, absolutely. So which means कि यार अगर again deep engagement अगर एक brand create कर सकता है, you know, to establish themselves as a thought leader in an industry, or to create that kind of an intimacy with their consumer, then why not? And that's the gap we saw कि यार अभी शायद से कोई भी इस चीज को इतना टैप नहीं कर रहा है. Also because nascent है, तो इसके it has its own challenges, because half the time before we are able to actually come to a place where a brand is willing to take this up as a possibility in their media mix or in their branding communication, a lot of time and effort goes into educating the brand. Oh yes, right? वैसे दुखती रक्त पे हाथ रख दिया यार तुमने. तुम ही मेरा दर्द समझ सकती हो और मैं तुम्हारा. क्या, हे भगवान.
आओ गली मिलो तो मेरे एक दिन आके भाई. हम साथी हैं इस दर्द में. बिल्कुल. बट यू सो राइट, एजुकेशन गोज बोथ वेज. ब्रांड की भी एजुकेशन होती है, पॉडकास्टर की भी एजुकेशन होती है. बहुत सारे लोग आजकल, मतलब ऑफ कोर्स अब पॉडकास्टिंग इज सच अ न्यू मीडियम. आप अगर उसमें अपना, इफ यू वांट टू क्रिएट sort of a niche in podcasting as a podcaster, तो you also need to be educated. There's so much. अच्छा, एक एक चीज नाउ, ऑफ कोर्स फॉर पॉडकास्टर्स एंड स्पेशली दैट लाइन जो वो बोलते हैं कि भैया पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ठीक है, तो उसके लिए एंड दिस बी आवर पॉडकास्ट टिप ऑफ द वीक. सोनिया मुझे ये बताओ कि व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ पॉडकास्ट ब्रांड पिच, व्हाट आर द की एलिमेंट्स अ पॉडकास्टर मस्ट एड्रेस या इंक्लूड टू एंश्योर दैट यू नो देयर पिच इज सक्सेसफुल, कि उनको ब्रांड से पैसा मिल जाए. कि ऐसे की एलिमेंट्स जो उन्हें ब्रांड पिच में इंक्लूड करने ही करने चाहिए, क्योंकि आपको ब्रांड को भी एजुकेट करना है विद रिगार्ड्स टू व्हाट इज पॉडकास्टिंग. सो टेल अस दोस, ऐसा ना ये सीक्रेट्स. यार तुम्हारे सीक्रेट्स. इसको ना मैं द वे आई पुट इट इज कि आप कहीं पे भी किसी भी चीज को पिच कर रहे हो ना, आपको एक आई डोंट नो इफ पीपल हु आर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस शो, अगर साइमन सिनेक का गोल्डन सर्कल वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना. उसकी TEDx टॉक है. ही टॉक्स अबाउट द गोल्डन सर्कल व्हिच इज व्हाई, हाउ एंड व्हाट. या तो मोटा मोटा वही एड्रेस करना है कि व्हाई शुड अ ब्रांड इन्वेस्ट इनटू अ पॉडकास्ट, plus why should you be the person who should be doing this for them. Is the podcast solving any problem for them? Right. Is it solving any kind of, is it, you know, catering to any kind of a need of their consumers or their customers? Is it creating any kind of an aspiration? Is it you know, क्या वो एक किसी फ्लैश पॉइंट को, एक ऐसे इवेंट को एड्रेस कर रहा है which is important for the brand to address. You know, for example, I love the way Apple has started, जितने भी उनके Apple events होते हैं उन्होंने उसका podcast भी create कर दिया है. You know, those are flash points, right? Those are events, those are milestone events. Yeah. And किसके पास है टाइम देखने का? नहीं है टाइम देखने का, इतना लंबा होता है. I don't have the time to watch it, but I can always, I'm an Apple geek, I'm like an Apple person through and through. So मैं सुनती हूँ यार, whenever there's an event, there's a launch that they do, their annual thing, I listen to every bit of it. So that's a flash point. Right. Again, are you creating any aspiration? Is there any passion or anything that you are catering to for the consumer of that brand? You know, I love how Sephora had this podcast called Lip Stories. Yes. Yes. पता है, अभी 2-3 दिन पहले ही we were talking about this podcast. Yeah, but go ahead. I would love to know what you love about this podcast. You know, I think podcasts, especially when it comes from brands, there are few podcasts that I, of course, India में इतने नहीं हैं जो मैं बहुत ज़्यादा admire करती हूँ. But outside India, some of the shows that I really admire, of course, one is the Lip Stories podcast, which talks to other women, other women's stories from a diverse background. And it's basically addressing, you know, Sephora is a beauty brand, right? But to be able to speak of stories which are beyond beauty. Yes. You know, which addresses diversity, which addresses... You are beautiful and more. Right? Yeah. Those kind of stories tell about a brand, that you're not just a beauty brand who's just talking about the superficial beauty, but also to the beauty which is inner, which is deeper, which is beyond the general vanity metrics of beauty. Absolutely. So that's what I love about the Lip Stories podcast. Then I remember there is a podcast by Ford Motors called Bring Back Bronco. So Bronco used to be their, you know, one of their much looked up to models for people who love to go to countryside drives, long drives, pretty big. And one interesting thing happened. One of the celebrities who fled after murdering his wife fled in that car, and it was captured in a live footage. In a live aerial footage instead, that he was going on this highway. And soon after that, Bronco disappeared from the market. True. It is interesting that how that could be a pivotal moment for a brand to just remove the car
from their entire line of other cars that they have, just because it became the talk of the town because a person, a Negative हो गया celebrity ना, murdered negative and association. fled. Yeah, negative association. I mean, Absolutely. right. And yet there were people, a tag team of few people who created an entire campaign to bring that car back. Yeah. And how it turned out. So, those are stories which are very, you can't think about those stories. It just creates that kind of an association with the brand. It creates it brings a moment of nostalgia. So multiple podcasts have, different reasons and different things that they address. So as a podcaster, again, what are you solving? What are you addressing? Are you creating curiosity? Are you catering to any aspiration? Are you helping the brand create a deeper engagement with their audience? And how? Is it solving any need? Is it again solving any kind of a problem? Is it creating any flashpoint? Is it bringing any flashpoint event of the brand out to their audience? So the why is what you need to address first. And then I think, how will you do it? Yeah. How will you do it? What are the capabilities that you have? Are you an audio engineer? Are you somebody who's good at production and managing a project? Because a lot of effort goes into the production as a producer in managing everybody. True. So play to your strengths and then figure out the how. That is such Absolutely. a lovely way in which you brought this point out. Also, I would love to say that apart from these key elements, right, there is the more sold you are on your podcast, the more you will be able to sell it to someone else. मतलब जितना आप अपने podcast पे sold हो कि भैया ये this is it, यही करना है, तो आपका जिस ब्रांड को आप पिच करोगे बिल्कुल वो भी उसी तरीके से उसी लय में आपके साथ हो लेंगे. I mean if you do check out the video on and if you are watching this video, you have to look at how Souniya is. I mean, there is a twinkle in your eye, Souniya, when you talk about these podcasts. There is a spark in your voice. The passion is just flowing through and through, and I love that. And I think that is something that only comes through being sold on your medium and loving your medium to bits. And our medium at this point of time is podcasting. But सोनिया एक बात बताओ, और ये ना थोड़ा सा ऐसा मस्ती वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद जितनी मार मारनी है तुम्हें तुम मार लेना. तो ये क्वेश्चन ये है कि कोई एक ऐसी चीज जो अगर पॉडकास्टिंग मीडियम में हो गई और मतलब समथिंग दैट इज सो लाइक अपॉलिंग एंड डिसग्रेसफुल कि तुम बोलो कि अब मैं जा रही हूँ, आई हैव सीन इट ऑल, आई हैव डन इट ऑल, अब मैं अपना पैक करके पूरी अवस्था जा रही हूँ, तो ऐसी कौन सी चीज है वो? काफी डीप क्वेश्चन है ये. पर इसका मेरे पास एक आंसर तो जरूर है. बताओ यार. So I don't know if you've noticed, I'm sure you have, that हर सीजन का एक फ्लेवर होता है, राइट? तो एक टाइम था कि मैं भी यूट्यूबर, एक टाइम था मैं भी ऑथर, अब है मैं भी पॉडकास्टर, मैं भी क्रिएटर, मैं भी कंटेंट क्रिएटर. Now, one thing that I started noticing has started happening with authors is that 20-21 लोग एक साथ आएंगे एक बुक को, और मे बी ज्यादा at some times, that they will come together, they will collaborate, create one book, there will be one theme, but 20-21 authors to that, or maybe more, sometimes 50. Yeah. I can't even for the life of me, Deepti, imagine 21 people coming onto a podcast round table. मतलब मर जाऊंगी मैं, खत्म हो जाऊंगी मैं, बोरिया बिस्तर बंद करके मैं निकल जाऊंगी कि अब नहीं होगा. बस ये लेवल हमने अचीव नहीं करना था, अब ये लेवल आ गया है, अब हमारी जरूरत नहीं है, लोग काफी इवॉल्व हो गए हैं. 20-21 वॉइसेस इन वन शो. मैं 2 भी सुन के परेशान हो गई हूँ, बट ठीक है, मतलब 21. But I completely resonate with what you are saying कि मतलब 5 जनों को ही मैनेज करना, 5 जनों का पैनल ही मैनेज करना इतना मुश्किल होता है, वो भी वीडियो में.
आप एक पॉडकास्ट में, एक ऑडियो मीडियम में एक दूसरे का नाम ही लेते रह जाएंगे लोग कि कौन बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा. So yeah, I completely hear you. मैं काफी I was just about to make a comment, then I refrained. अरे बताओ. मैंने कहा फिर वहां पे फिर you will need one person there who will say the nation wants to know. Oops. अच्छा, सोनिया, वी हैव ऑब्वियसली मतलब पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया. सारे सवाल मैंने पूछ लिए. तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल हो पूछने के लिए तो पूछ लो. यार पहले तो मैं ये एड्रेस करना चाहती हूँ कि तुमने बोला कि मेरी आंखों में जो ट्विंकल दिख रहा है और जो मेरी आवाज में जो तुम्हें हाँ स्पार्क है, तो ट्विंकल का राज तो है एक रिंग लाइट है सामने. और आवाज में जो whatever you hear is because my throat is bad और इस इंटरव्यू से पहले एक स्ट्रेप्सिल्स ली है. देखो जनाब, दिस इज बेसिकली अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑन पॉडकास्ट. वो रह के भी झूठ नहीं बोल पा रही है. लाइक सच बोलूंगी, मैं सच ही बोलने आई हूँ, मैं सच ही बोलूंगी. वैसे तो ठीक है, स्पार्क है, सब है, लेकिन वो एड ऑन हो रहा है, इट्स गेटिंग एम्पलीफाइड. और फिर हम तो इन द मीडियम ऑफ एम्पलीफिकेशन है ना, तो पावर ऑफ वॉइस, तो फिर एम्पलीफाई हम इस तरीके से कर रहे हैं. Absolutely. A salute to that. Thank you so much, Sonia, for coming on the show. ये podcast क्या है? I think मैं ज़्यादा हंसी हूँ rather than us having conversations. We've laughed a lot more. And I would love to host you again sometime soon, hopefully, for maybe an in-depth sort of a deep dive into branded podcasts. मजा आएगा. क्या बोलते हो? Why not? Absolutely in for it. बिल्कुल करते हैं. Very cool. I loved having this conversation. बहुत मजा आया बहुत टाइम बाद इस conversation में. Interestingly, Deepti, not every podcaster is able to create this kind of a like vibe, मतलब fun in the show. वो बहुत ज़्यादा conversations में ना बह जाते हैं. Stick to the questions. They do not pick on the vibe of the guest and create this kind of an atmosphere and vibe for their audience. So kudos to you. Thank you. This also comes from love for the medium and love for the people who are associated with this medium. Again, thank you so much, Sonia, and we will definitely catch up for that dinner that we promised, because I know we've dragged you from a sick day to come on this podcast. Thank you. No problem. I loved it. ये पॉडकास्ट क्या है? ये पॉडकास्ट क्या है? जानिए दीप्ति के साथ.